In the previous video, we have studied the amino acids and introduction about the proteins and different examples of the proteins along with their functions. Now in this video, we are going to study the structure of proteins. So first is कि proteins क्या है? तो simply proteins are polypeptides. What it is? क्या है? Polypeptides. Poly मतलब many and peptides मतलब peptide bond. Peptides मतलब peptide bond. अब यहाँ पे हमें लर्न करना है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स कि प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर कैसे कैसे होता है. In other way, we may call it as a classification of proteins on the basis of structures. So जो बायोलॉजिस्ट है उन लोगों ने प्रोटीन का 4 लेवल पे स्टडी किया है. 4 लेवल पे स्टडी किया. कौन सा? फर्स्ट वन इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंड वन इज secondary structure, third is tertiary structure, and fourth one is quaternary structure. Right? Biologists studied the proteins at 4 levels: primary, secondary, tertiary, and quaternary. So what is first primary structure that we will first discuss? So that is primary structure of protein. Primary मतलब simply there is a polymer of amino acids. Primary मतलब long and linear chain of amino acids. कौन से? Only just the long and linear chain of amino acids. You also called it as only a sequence of amino acids. Either long linear chain of amino acids or sequence of amino acids. So क्या है? First amino acids attached to second amino acids, third, fourth, fifth, and so on. We just consider the fifth. In between two amino acids there is a peptide bond. कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड है. दिस इज फर्स्ट अमाइनो एसिड and this is last amino acid. First amino acid that we called it as a N terminal. Last amino acid we called it as a C terminal. First amino acid N terminal we termed it as a left end. Last amino acid C terminal we termed it as a right end. Right. So this is what the long linear chain of amino acids. This is what the primary structure of amino acids. तो फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन सी इंफॉर्मेशन देता है? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स कैन ओनली गिव द पोजिशनल इंफॉर्मेशन. Positional information of amino acids in a chain of protein जो लॉन्ग और लीनियर होती है. राइट. जैसे कि कौन सी पोजिशनल इंफॉर्मेशन? विच इज फर्स्ट, विच इज सेकंड, विच इज थर्ड, विच इज फोर्थ, विच इज लास्ट. ये सब इंफॉर्मेशन हमें मिलती है
प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, राइट। अभी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अगर एक कोई भी प्रोटीन अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर दिखाता है तो वो नॉर्मली दैट प्रोटीन इज नॉन फंक्शनल। कैसा है? इट्स नॉर्मली नॉन फंक्शनल। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और जो प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर दिखाता है कैसा है? नॉर्मली नॉन फंक्शनल। दिस इज द फर्स्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर, long and linear chain of amino acids. Only the sequence of amino acids. प्राइमरी होने के बाद what happened? The second level is secondary structure. अब डिस्कस करेंगे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है प्रोटीन का। तो फर्स्ट प्राइमरी होने के बाद we'll discuss the second, that is the secondary structure. Secondary structure. अब सेकेंडरी प्राइमरी स्ट्रक्चर में ओनली लॉन्ग लीनियर चेन। अब क्या होता है? जो थ्रेड होता है ओनली अमाइनो एसिड का, दैट थ्रेड डज नॉट रिमेन एज अ लीनियर लॉन्ग, एज अ रिजिड रॉड। रिजिड रॉड के जैसा वो लीनियर नहीं रहता है। क्या होता है? जो थ्रेड होता है और प्रोटीन चेन, थ्रेड और प्रोटीन चेन, आप उसको थ्रेड भी कह सकते हो। थ्रेड और प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन चेन और थ्रेड होती है, वो लॉन्ग लीनियर एक्सटेंडेड एज अ रिजिड रॉड नहीं रहता है। वो क्या होता है? दिस प्रोटीन और द थ्रेड इज फोल्डेड, फोल्ड होता है, फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ, फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। एक हेलिक्स में फॉर्म होता है, राइट। क्या कहा? प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है लॉन्ग लिनियर चेन थ्रेड, दैट डज नॉट एग्जिस्ट एज अ लॉन्ग लिनियर चेन। क्या होता है वो थ्रेड? दैट प्रोटीन चेन और द थ्रेड इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, एंड जब वो फोल्ड होता है, हेलिक्स प्रोड्यूस करता है, दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, राइट। अब देखेंगे क्या कहा मैंने? दिस इज लॉन्ग थ्रेड folded and form the helix. These are helix. क्या प्रोड्यूस किया? हेलिक्स। जो थ्रेड है वो फोल्ड हुआ, एंड फोल्ड होने से दे फॉर्म द हेलिक्स, राइट। अब ये थ्रेड है, दिस इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसको क्या कहा गया? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब देखिए इसके ऊपर मैं ये डॉट देता हूं, दिस डॉट, दिस डॉट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दिस डॉट रिप्रेजेंट्स द अमाइनो एसिड्स। दिस इज अमाइनो एसिड प्रेजेंट ऑन द चेन, एंड हमें पता है कि दो अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रोड्यूस होता है? तो पेप्टाइड बॉन्ड। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में ओनली पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अब यहां पर क्या होगा? ये अमाइनो एसिड, दिस अमाइनो एसिड, दोनों के बीच में क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड, करेक्ट, राइट। अब क्या होता है? द अमाइनो एसिड्स विच आर क्लोज टू वन अनदर, दे ऑल्सो फॉर्म द बॉन्ड, एंड कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं? दे फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड, दे फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड। उस थ्रेड में जो अमाइनो एसिड नजदीक आते हैं, एंड नजदीक आने के बाद दे फॉर्म द हाइड्रोजन bond. So first is peptide bond, second one is hydrogen bond. This structure is known as secondary structure, and this is alpha helix. कौन सा है? अल्फा हेलिक्स। एंड दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन कौन से प्रोटीन में? प्रोटीन दैट इज केराटिन, एंड आपको पता है कि केराटिन इज द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन हेयर, जो हेयर में होता है। सो दिस इज अल्फा हेलिक्स। अब क्या होता है कि समटाइम्स टू चेन्स कैसे होते हैं? वन चेन, दिस इज अनदर चेन, राइट।
एंड इसके ऊपर क्या होंगे, दिस डॉट लाइक स्ट्रक्चर। These dot like structures क्या represent कर रहे हैं, amino acids, right? Dot like structures which represents amino acids. This is one chain and this is second chain. This is one chain and this is second chain, right? अब क्या होता है कि इन दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड है, या इन दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। अब क्या होता है कि जो अमाइनो एसिड्स क्लोज आते हैं, दे फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दे फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दे फॉर्म द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। एंड ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं बीटा प्लीटेड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये कहां पर प्रेजेंट है, कौन से प्रोटीन में शो करता है, इट शो इन सिल्क फाइबर। कहां पर, सिल्क फाइबर्स। अब देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है, जो प्रोटीन का चेन है, थ्रेड है, इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, 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 राइट। पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, अल्फा हेलिक्स, केराटिन, टू चेन, पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोड्यूस हुआ है, तो कहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म, दिस हाइड्रोजन बॉन्ड है जो फॉर्म हुआ है बिटवीन अमाइनो एसिड्स, बिटवीन अमाइनो एसिड्स, बट अमाइनो एसिड ऑफ सेम चेन, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिफरेंस कि हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्फा हेलिक्स इज फॉर्म बिटवीन द अमाइनो एसिड ऑफ सेम चेन, राइट। व्हाट अबाउट बीटा प्लीटेड और सिल्क फाइबर, यहां पर भी पेप्टाइड बॉन्ड है, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ है, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन amino acids, but amino acids of two different chain, amino acids of this chain and amino acids of this chain. So this hydrogen bond is formed between the amino acids of two different chain, and that is the basic difference between the alpha helix and beta plated, right? So this is secondary structure. अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन से बॉन्ड है, तो ओनली टू। प्राइमरी में ओनली पेप्टाइड, सेकेंडरी में पेप्टाइड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसके बाद का कौन सा स्ट्रक्चर है, इसके बाद का स्ट्रक्चर है दैट इज टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। सो वी लर्न द थर्ड स्ट्रक्चर, एंड कौन सा है, टर्शरी स्ट्रक्चर, राइट, टर्शरी स्ट्रक्चर। अब व्हाट हैपेंड इन टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, सो इन टर्शरी स्ट्रक्चर जो लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का लॉन्ग चेन है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या बनाता है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हेलिक्स बनाता है। देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर मॉडिफाइड होता है उसमें टर्शरी स्ट्रक्चर में, तो क्या है, तो लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन इज फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, अपने ऊपर ही फोल्ड होती है, राइट, एंड दे फॉर्म द स्ट्रक्चर, हम उसे कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, सो नेक्स्ट this is tertiary structure of the protein, right? This is tertiary structure. This is first, कौन सा, n terminal, this is last, कौन सा, c terminal,
N terminal and C terminal, राइट। सो कौन से बॉन्ड प्रोड्यूस होंगे अगर हम टर्शियरी स्ट्रक्चर को देखेंगे? तो क्या होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर में? मोस्टली द लॉन्ग प्रोटीन चेन फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ like a woolen ball, like a woolen ball के जैसा, राइट। सो दिस इज टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होता है विच गिव्स द थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द जो प्रोटीन होता है विच गिव्स क्या देता है? तो थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ द प्रोटीन, राइट। ये जो थ्री, और उसका अनदर एक इंपॉर्टेंट है, ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर इज एसेंशियल, is essential for many biological activities, many biological activities। अगर बायोलॉजिकल एक्टिविटी करनी है तो दैट प्रोटीन शुड हैव द टर्शियरी स्ट्रक्चर, राइट। सो टर्शियरी स्ट्रक्चर इज essential for many biological activity and tertiary examples कौन को करते हैं? तो enzymes, enzymes have tertiary structure। अब enzymes के बारे में हमें पता है कि enzyme catalyze the reaction, specific enzyme specific substrate, जैसे कि starch and amylase। तो एंजाइम के ऊपर एक पॉकेट होता है एंड उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट, एक्टिव साइट, राइट, जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है। अब देखो एक अमाइनो एसिड एंड दिस इज अमाइनो एसिड, दिस अमाइनो एसिड्स। सो टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा तो फर्स्ट कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड, सेकेंड हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड भी होना चाहिए, और दूसरा एग्जांपल जो है तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी होना चाहिए, राइट। अब देखो ये अमाइनो एसिड्स है तो उसका कोई तो भी फंक्शनल ग्रुप होगा OH, इसका भी कोई तो भी फंक्शनल ग्रुप होगा CHO। एक सब्सटेंस आएगा यहाँ पे बाइंड होगा, तो कौन सा सब्सटेंस बाइंड होगा? जो यहाँ इसके साथ भी बाइंड हो सकता है एंड इसके साथ भी बाइंड हो सकता है, राइट, एंड उसे हम कहते हैं एक्टिव साइट। एंड देयरफॉर this tertiary structure is essential for many biological activities। इसका एग्जांपल है enzymes, right। तीसरा, suppose this is sulfur containing amino acid, this is sulfur containing amino acids, when they come close together they form the bond and that bond is known as disulfide bond। कौन सा बॉन्ड? डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो थर्ड बॉन्ड प्रोड्यूस होता है दैट इज डाइसल्फाइड बॉन्ड। कहां डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रोड्यूस होता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द अमाइनो एसिड्स कंटेनिंग सल्फर, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड जब एक साथ आते हैं तो दे फॉर्म द बॉन्ड एंड उसे कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। एंड यहां पर होता है आयोनिक बॉन्ड। सो फोर्थ बॉन्ड जो प्रोड्यूस होता है वो होता है ionic bond, right। So this is all about the tertiary structure of protein which is essential for many biological activities। Example enzymes। So first primary structure में only one bond, कौन सा? पेप्टाइड बॉन्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में टू बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड एंड सेकेंड वन इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। Then third tertiary structure में four bond, as usual peptide bond as it is a long chain, then hydrogen bond, then disulfide bond and ionic bond। So presence of four bonds, that is the tertiary structure। And tertiary structure हमें क्या देती है? Three dimensional view of the protein, right। इसके बाद लास्ट वाला कौन सा स्ट्रक्चर है? लास्ट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। लास्ट कौन सा है?
Last is quaternary structure of the protein. Last is quaternary structure. अब देखो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है? तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज, एक ही वर्ड लिखूंगा, इज द असेंबली ऑफ, असेंबली यानी गैदरिंग, असेंबली ऑफ मेनी पॉलीपेप्टाइड्स. Many polypeptides are arranged in such a way that they form the plate-like structure. They form the cube-like structure. So, example is hemoglobin. Hemoglobin is the protein which show quaternary structure, and this hemoglobin is made up of four polypeptides. कितने पॉलीपेप्टाइड से बनी हुई है? इट इज मेड अप ऑफ फोर पॉलीपेप्टाइड, एंड उस फोर में से टू आर आइडेंटिकल, सो दैट इज कॉल्ड एज टू आर अल्फा पॉलीपेप्टाइड्स एंड टू आर बीटा पॉलीपेप्टाइड्स. राइट. सो स्ट्रक्चर कैसा होगा? वन, these two are alpha polypeptides. These red color two are beta polypeptides. एंड इसके ऊपर क्या एक पॉलीपेप्टाइड है, तो ऑब्वियसली देयर इज अमाइनो एसिड्स. देयर आर अमाइनो एसिड्स. सो कौन से बॉन्ड्स होने चाहिए? तो फर्स्ट बॉन्ड इज पेप्टाइड बॉन्ड, सेकंड इज हाइड्रोजन बॉन्ड, थर्ड इज डाइसल्फाइड बॉन्ड, disulfide bond, and fourth one is ionic bond. Ionic bond. So this is the quaternary structure. So in short, quaternary structure मतलब assembly of many polypeptides, and they form a cube-like structure or plate-like structure. Give the quaternary structure, and that is the architect of protein. Example: hemoglobin. Four polypeptides. Two are identical, उसे कहते हैं टू अल्फा, एंड रिमेनिंग टू आर आइडेंटिकल, दैट इज टू बीटा. कौन से बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड. सो हमने क्या डिस्कस किया? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. मैंने पहले ही कहा कि बायोलॉजिस्ट ने प्रोटीन को चार लेवल पे स्टडी किया: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. In the next video, we'll describe the another biomolecules, that is DNA.